Yes, Mr. SP. सर जय हिंद सर। रिपोर्ट थाने भेजी थी सर। On which date? सर ये उसी समय भेज दी थी सर। Received office on the 16/10/23. 16/10/23। Mr. SP, these are the heaviest cases and working of the police shows that police is working very negligently. Even in case rape and POCSO, you people are not working so diligently as per the object of the act. सर आई टेंडर कंडीशनल अनकंडीशनल अपॉलॉजी सर। इसमें जिनकी भी गलती है सर, वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम सर। थाने पर सर इंस्ट्रक्ट किया था सर, and we are regularly taking meetings also sir and instructing regarding the same sir. The presence of TI and SP, Malad. Yes, we have moved an application, Malad. The TI is here, Malad, and the SP application we have moved, Malad. I think they will be permitted to appear through BC, Malad. Yes. Malad, what has happened, Malad, in this case, Malad? Since the DNA report could not file before you launch it, Malad, in these circumstances, this position is arising, Malad. In addition to that effect is that, Malad, that we have filed an affidavit on 18/3/2025, Malad, the affidavit of SP, Malad. 18/3/25, Malad. affidavit of SP. Yes, Malad. Malad, the DNA report has received, Malad. That DNA report has been filed out to affidavit, Malad. That is annexure R1, Malad. When DNA sample was sent? It was sent on. It is mismatched, and Malad, in this period, Malad, from 23 to 25, Malad, there were 4 investigating officers, Malad, against whom, Malad, an inquiry has been set up, Malad. The CSP was directed to submit a report to Council, Mr. Council. It is the report dated 11/3/2025. yes, Malad. And sample for DNA was sent on 21/2/2025. While official report was received in the office of the SP on 16/10/2023. Yes, It remained pending in the office of the SP unattended almost for a period of more than 15 months. yes. Please reason for this. Malad, the investigating, there are 4 investigating officers, Malad, those who are. No. If the report was received in the office of the superintendent of police, he was dated and sent it to the concerned police station. Yes, Mr. SP. SP officer, TI office, Halit. Then dispatch this report to the concerned police station. सर जय हिंद सर। रिपोर्ट थाने भेजी थी सर। On which date? सर ये उसी समय भेज दी थी सर। Received office on the 16/10/23. 16/10/23 sir. 6/11/23 it was sent to the TI. 6/11/2023. Almost after 20 days. Yes, sir. What is the proof that you have filed 6/11? Do you have any proof to? Mr. SP, these are the heaviest cases and working of the police shows that police is working very negligently. Even in case rape and POCSO, you people are not working so diligently as per the object of the act. सर आई टेंडर कंडीशनल अनकंडीशनल अपॉलॉजी सर। इसमें जिनकी भी गलती है सर, वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम सर। थाने पर सर इंस्ट्रक्ट किया था सर, and we are regularly taking meetings also sir and instructing regarding the same sir. Very state of affairs on the part of the police. So these investigators are receiving help. SP officer. Police the score थाने पहुंच गई. Within 14 days. Yes, sir. Then I whole team then put it in the police. So the concerned Inspector Neha Gurjar. The SI Neha Gurjar who was present, who has received that particular and also investigation officer. She was investigation officer. Then when she did not send the sample for DNA profiling. That's why, Malad, he has been changed, and in the meanwhile, after 4 investigating officers have been changed. So against all 4 officers, Malad, Mr. Council, this is working of the police department. Sir, The person is in jail for almost for a period of 2 years. yeah. And how you prepare dealing with the case casing, police and POCSO. That
that conditional apology has been printed to the Superintendent of Police, madam. But against 4 officers, madam, those who have not been acted promptly, madam. And now this report is negative. So I think it is yes, it is negative. Negative, madam. So why this court should not order to pay the compensation of arrest 10 lakh to this person who is in jail for the illegal detention? And why this amount should not be recovered from the penal officers? नेक्स्ट किसी का आप ये एड्रेस इन द कोर्ट कि भाई इसको कम से कम 10 लाख का कंपनसेशन क्यों नहीं दिलाया जाए, और ये हम सब रिकवरी आप लोगों से करेंगे, जितने भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जो भी ऑफिसर, ऐसे ही नहीं चलेगा सिस्टम। आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हैं, अदरवाइज तो कानून का कोई नेटवर्क बचेगा। को फेल कर रहे हैं, आप पूरे बीएनएसएस के प्रोविजंस को फेल कर रहे हैं, आईपीसी के प्रोविजंस को फेल कर रहे हैं। जब आपकी इच्छा है तब आप बीएनए की हो जाएंगे, तब इच्छा नहीं होगी तो what is this? में भी कांटेक्ट करो, we'll address it. आप ये आदमी है 1.5 साल करीब जेल में रहा है, इसको 1.5-2 साल तक तो जेल में है। 1 साल आदमी में हो गया, 1 साल आदमी में, और ये 23 से जेल में है मिस्टर काइलर, तो 1 साल आदमी हो चुके हैं। 1 साल इसको हो गया है करीब 7 महीने। So who shall pay compensation to him? Whether can we bring back his wage? That is the point. You furnish the information of in writing with regard to the all investigation officer and TIH. Those who have worked, madam, during that period. Will do. So the proper order will be passed about granting compensation. Yes, sir. Mr. SP, what action you are taking against the alleged officer? सर सीएसपी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है सर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस सर आई विल टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम सर। एक बात बताइए, क्या आपके यहाँ आप बीइंग द एसपी ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, क्या थाने के केसेस जो हीनियस केसेज हैं, रेप के हैं, पॉक्सो के हैं, मर्डर है, क्या आप इनका कोई सुपरविजन नहीं करते हैं? सर करते हैं सर, वीकली सुपरविजन भी है सर। सुपरविजन क्या आप ये देखते हैं कि मैं एफएसएल रिपोर्ट क्या आई, फिर डीएनए के लिए गया नहीं गया, कोर्ट में कब पेश हुआ कब नहीं पेश हुआ, क्या सैंपल प्रॉपर्ली टाइम में, कैसे आप इसको सुपरवाइज करते हैं? सर ऑल द सुपरविजन अथॉरिटीज सर, सीएसपी, एडिशनल एसपी एंड आई माई सेल्फ सर, हम लोग सुपरवाइज करते हैं सर थ्रू सीसीटीएनएस ऑल्सो सर, एंड थ्रू द रिटन लेटर्स ऑल्सो सर, एंड विद द क्राइम मीटिंग में भी सर हम उसको पूरा जो भी पेंडिंग केसेस होते हैं सर, स्पेशली द हीनियस ऑफेंसेस सर, उनको हम सुपरवाइज करते हैं सर। नहीं, आप सुपरवाइज करते हैं, बात देखिए आपके सामने जो केस है, जब कोर्ट में इसमें लिखा है तब तो आपने इसको डीएनए के लिए भेजा है, अदरवाइज रिपोर्ट वाज police station almost for a period of 14-15 months. So how the supervision? It shows that supervision is superficial. सर बिकॉज द केस वाज चार्ज शीटेड सर, तो हमारा सर मेनली भाई even in charge sheeted cases, it is the duty of the prosecution and police to produce such witnesses and all the evidence, oral as well as documentary before the trial court. सर वी विल फॉर्म अ बेटर सुपरविजन मैकेनिज्म सर, ताकि हम कोर्ट के केसेस और जो अदरवाइज ये क्या है, ये आप लोगों के खिलाफ व्यक्तिगत ऑर्डर पास करने पड़ेगा, आपसे रिकवरी करनी पड़ेगी आप लोगों से। आई एम वेरी सॉरी, State should suffer for negligence. Why common people should suffer for negligence? आई एम वेरी सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा सर, वी विल हैव बेटर सुपरविजन सर, एंड सर Anup Kumar Saxena, learned counsel for the applicant, Shri N. Gupta, Shri learned additional PP for the respondent state. SP
क्या नाम है इनका? आगम Shri Agamjar, Superintendent of Police Chhatarpur, has appeared for video conferencing and Arvind Singh Dangi. PRTI Yes, sir. and Arvind Singh Dangi. Town Inspector, Public SHO